सैयद फुरकान फैज़ी को कि वो आएँ और अपनी इंग्लिश तकरीर पेश करें। In the name of Allah, the most beneficial and merciful. I, Syed Furqan Faizi, standing here in front of you all to talk about the Quran, our holy book, and scientific education amazingly fit together. It's like a connection between our beliefs and what we discover through science, giving us a chance to think about the special wisdom in the Quran's verses. I have heard people saying that Islamic knowledge and Islamic education is old tradition, and now we should only focus on modern education. But this is completely false. Let's understand this in a better way. You see, science is always trying to figure out how things work in the world around us, and guess what? It has found a lot of things that exactly match up with what Quran said a long time ago. Apart from that, there are many such things that yet to be discovered by science but has already been mentioned in the Quran way before the advent of modern cosmology and way before scientists figured them out. Quran talked about these things more than 1400 years ago. Let's delve into the first example about how cloud forms and rain occurs. In this matter, Allah says in the Quran, Surah Al-Nur, chapter number 24, verse number 43. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا. Do you not see that? Allah gently drives the cloud, then joins them together, piling them up into masses from which you see raindrop come forth. This phenomena of rain described by scientists in the similar manner as wind drives the cloud, forming a definite shape with interconnected systems of water cycle, which eventually led to rain. We all have read in science about how human baby develops in different stages from a tiny drop of blood to a living body. Regarding this, Allah says in the Quran, Surah Al-Mu'minun, chapter number 23, verse number 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. We created the man out of the extract of clay. Then we made him into the drop of life germ. Then we placed the drop in the safe depository. Then we made this drop into a clot. Then we made the clot into bones. Then we made the clot into lump. Then we made the lump into bones. And then we clothed the bones with flesh. And then we caused it to grow into another creation. Subhanallah. Not only this, Quran verses also talked about the expanding universe. Centuries before the advent of modern cosmology, the Quran alludes to the continuous expansion of the universe, which scientists had recently discovered. Allah says in Surah Az-Zariyat, chapter number 51, verse number 47, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. And the universe we constructed with strength, and indeed we are expanding it. Quran also talked about the self-orbital movement of sun in Surah Al-Anbiya, chapter number 21, verse number 33. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. He is the one who created the day and the night, and the sun and the moon, each traveling in its own orbit. Another verse in Surah Al-Anbiya, verse number 30, it is mentioned that we made every living thing from water. And modern science recognizes water as a fundamental component of existence of life. The Quranic references align seamlessly with our current understanding of the vital role water plays in the sustaining life. These are just few examples. Just like a drop of water from a deep diving ocean, there are many such examples that can be quoted in the similar context, but due to lack of time, I would like to wrap up my speech by just requesting you all to delve inside the knowledge of Quran and Deen. No one is stopping you to become doctor, engineer or whatever you want. आपको कोई नहीं रोक रहा दुनियावी तालीम हासिल करने से, लेकिन कुरान का पढ़ना भी जरूरी है. अरे हम तो उस मजहब से वास्ता रखते हैं जिसकी बुनियादी इल्म पर हुई है. हम कैसे जाहिल और पीछे रह सकते हैं? और अब तो और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि फिजाए हाल आप लोगों से छुपा हुआ नहीं.
मैं उन सब वालिदैन से ये गुजारिश करता हूँ कि मॉडर्न साइंस ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ, और बच्चों से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने घरों में साइंटिफिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करें कुरान के आयतों के साथ। अरे आप कुरान को पढ़ने जाएंगे तो आपको यूनिवर्स के एक्सपेंशन से लेकर के मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ये सारी चीज़ें आपको कुरान में मौजूद मिलेंगी। कुरान आज के मॉडर्न साइंस से कमतर बिल्कुल नहीं, बल्कि कहीं ज़्यादा आगे है। और मॉडर्न साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं और ना कभी इतनी हो सकती है कि इसका हम लोग कंपैरिजन कुरान मजीद के साथ करें। बट वक्त के साथ साथ बेशक हमने कुरान में लिखी चीज़ों को साइंस के ज़रिए प्रूफ होता देखा है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक मशहूर लाइन के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज़ से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाएँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशा अल्लाह तबारकल्लाहु व तआला। हज़रात सामीन, आपने बखूबी जामिया फ़ैज़ुल हिदाया अल इस्लामिया मिनहाज नगर के तालिब इल्म को देखा। अब प्रोग्राम के इख्तिताम नहीं बल्कि वक्फ़े का ऐलान किया जाता है। फिर नमाज इशा के बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम फिर शुरू किया जाएगा, इसलिए नमाज के इख्तिताम के बाद फिर आप इसी मजलिस में तशरीफ़ लाएँ।